Sundan Shah, Saeed Mirza, and Aziz were doing two serials simultaneously. One was called Police Station, and the other was called Nukkad. I still remember we had gone, the Secretary of Ministry of Information and Information Broadcasting, Mr. Gill, lovely man, called us over and said, we want you all to do these series for us, Doordarshan. And do you have any ideas? So we presented these two ideas. And Police Station and another title for Nukkad. I said the alternative title is Nukkad. I like Nukkad very much. This is the secretary himself, Gilsa. So please keep that Nukkad. Wo rakhiye now. क्या करता है? रख दे। अरे फालतू पढ़ेला था, अपन उठा लिया, कोई गुनाह किया क्या? ये फालतू है? अरे ये गुरु का बोर्ड है, रख दे। लेकिन वो तो चला गया ना। अरे वो चला गया तो क्या हुआ? मैं हूं ना इधर, रख दे वो बोर्ड। अरे तो अभी तक गया नहीं, भाग इधर से, भाग, चल। बड़ा आया गुरु का सामान चोरी करने वाला। आज अगर गुरु होता ना तो उसको बराबर बताता। क्या आदमी था गुरु। अपन तेरे को आज भी सलाम करता है गुरु। अरे बाबा, इन लोग हार पहने बगैर दुबई जाएंगे तो उधर लोग क्या सोचेंगे कि नुक्कड़ पे इन लोग का कोई दोस्ती नहीं। ए, क्या बोला तू? अरे औकात में रह। ए सेठ, ना तो ये लड़की चोर है, ना वो लड़का गुंडा, समझा? Television is a medium to deal with ideas. It's not just entertainment. You can deal with ideas. Maybe you can make a reflection of society as you see it, as you perceive it. So that's why we thought of a street corner. Lots of characters. And very definitely not the middle class and upper middle class and the rich. So who do we reflect? The 75% of the rest of the population. We reflect that. They become our characters. There was a reason. Why did we select this? I think we felt that they've never been seen. And all our lives, we learned so much from, a cab driver, a bus conductor, a mochi, a waiter, that we spent our lives with as growing up in the city of Mumbai. And let's talk about them, yeah? And the sweeper, the maids who come to your house to sweep, and you're learning from, and their stories have to be told, And they make up the majority of the population, yeah. जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अरे काहे तू अपनी खटारा दुकान की हर वक्त सफाई करा था? हम यहाँ के राजा हैं और ये है हमारी राजधानी। काय की राजधानी? खोपड़ी, मेरे दोस्त, कहाँ चला गया तू? पकड़ लो, गिर जाएगा नहीं तो। ये क्या है? चादर। किसके वास्ते है चादर? तेरे कफन के वास्ते। ये हवलदार, अपन तो अभी जिंदा है। अरे पण तू अभी मरने वाला है ना? मैं भूल गया। लेकिन अपन तेरे को नहीं भूला खोपड़ी। We had a host of writers. There was Imtiaz Mateen, there was Inayat Akhtar, there was Swaran Singh and others. And simultaneously, we allowed ideas to come. Anyone who had an idea could come up and give it to us. And we pay them 1,000 rupees just for the idea, 1,000 rupees for an idea. I still remember there was some chap would arrive, and at the gate of the studio, they were not allowed in. He said, but I've come with a script. Oh, script writer, that's the guy's name. He said, hey, anybody come with a script idea, not actors, script idea, allow them in. So strange birds were coming in with an idea. And like somebody came up with an idea for Dubai. They loved it. Just the idea. Paid him 1,000 rupees, went, we then fleshed the whole idea out. लड़की! क्या है? कपड़ा धो
धोने का तो धो, आवाज मत कर, समझा क्या? चल बेफुट। अरे राधा की बच्ची, अकल की कच्ची। Whenever we travel, even till today, you go to a middle class house and you introduce and okay, for an upper middle class, these are the guys who made Makkah. Hey, you're the man. And the grandfather saying, you're the people, what a lovely. And they're surprised because how did he, if you see the living conditions, they are upper middle class people. And yet you reach out to them also across India. Besides of the fact that if we happen to meet a waiter in a restaurant who's already on your side, and then across India, dhaba walas, when we travel, you're the people we look at, free for you all. ए गणपत, आज तेरा थोबड़ा काय गुलाट केला रे? ये भूतभीत का सपना देखा रहा क्या रे? तू हवलदार होके डर गया क्या? ए पोपट तू किधर बैठेला मालूम तेरे को क्या? यही है अपना इज्जत। अरे तू डर जाएगा तो पब्लिक का क्या होगा रे? ए जवाब दे। ए हलवे। तू क्या करता है? पूछते है पब्लिक का क्या होगा, इधर मेरा क्या होगा मुझे मालूम ना। Aziz fundamentally brought in a very crucial human quality into the whole series. A very, he underlined the humanity of it all. And that is very critical for a series. Without overemphasizing, but he brought in that brush stroke. And then, of course, finally, he started directing. I did the first few with Aziz and Kundan, then I and Aziz, and it was a mix. We sort of divided the whole thing. मैं मानती हूँ कि पूरे देश में चोरी और बदमाशी का अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन अंधेरी राह पे चलने के लिए एक दिए की रोशनी भी काफी होती है। एक दिए की रोशनी से कुछ नहीं होता मैडम। इस भयानक अंधकार को दूर करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। तुम सिर्फ उन मुट्ठी भर बदमाशों की बात कर रहे हो जो दिन रात मुल्क और समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरे उन करोड़ों की तरफ भी तो देखो जो मेहनत मजदूरी करके दिन रात पसीना बहा के सिर्फ रोटी कमा रहे हैं, फिर भी वो चोर नहीं हैं। मैडम आप तो शायरी करने लगी। आज दुनिया को शायरों की नहीं चोरों की जरूरत है। We did 2 or 3 episodes on communalism. And we did this because it was at that particular point in time we felt it's essential. This is one more quality of backed by our constitution. And look at the characters of Nukkar. Who are they? All kinds of people, all communities, all castes, all there together. So we did touch upon communalism. We did touch upon Diwali and Christmas and Eid. We celebrated that simultaneously. And we celebrated the fact that so many of them were Dalits. The sweeper and the mochi were Dalits. We celebrated that. In other words, what were we doing? We were saying, this is India. This is my India. Of course, what's happening now, I'm not so sure. I'm not so sure now any longer. But this is the India I believe in and I'll fight for. And what's happening now, I will oppose for the rest of my life. I'll stand up and say, wrong. It's not my India. It's not the constitution. बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। बाबूजी, मुझे तो इनके इश्क के आसार नजर आते हैं। अरे अकेलेपन से बचने के लिए कोई ना कोई मोहब्बत करने वाला चाहिए। एक प्यार करने वाली लड़की। मेरे को भी मांगता है राजा भाई। बोला मेरे को भी मांगता है। ये गुंड, तेरे को मालूम है क्या, मोहब्बत के वास्ते बहुत पैसे चाहिए, बहुत बड़ा आदमी होना चाहिए, और तू है क्या, गड़का। And we did an episode in which we had a go at this concept because you can't have ideas of 21st century if you do not take 75% of the people along with you. If it's only meant for the 25%,
What 21st century are we talking about? Think again. We did an episode, and we got into flack. I still remember there was a man called additional DG of Doordarshan that said if I was there, I would have stopped you guys. You guys are cutting too close to the bone. You're becoming too political. But that's the way it was. But I must say that those regimes were far more tolerant. They took us, they had problem with us, and they might have stopped you, but by and large, tolerant. हरी हे राधा, ये ले हलवा मैंने इसमें किसमिस भी डाला है अरे वाह, भूख लगे ना, तब तो बहुत मजेदार होगा ना। खाकर तो देख हाय हरी यस, हलवा खाएगी? अरे इसमें किशमिश है। अच्छा कुत्ते की दुम को पाइप के अंदर रखो तो क्या सीधी हो जाएगी? कभी नहीं। तो हरी है कुत्ते की दुम 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 दुम, कुत्ते की दुम 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 दुम। ये है मधु की अदाओं का दीवाना, ये है मधु की अदाओं का दीवाना, घासलेट की बत्ती का परवाना, घासलेट की बत्ती का परवाना। ये है मधु की अदाओं का दीवाना, ये है मधु की अदाओं का दीवाना, घासलेट की बत्ती का परवाना, घासलेट की बत्ती का परवाना। We did a last episode where the Nukkad is absolutely empty of people. The cop comes in because now it's a declared zone for development and it's going to change. And there are barriers put in, down, condemned area to be demolished. And the policeman enters, Ganpat enters, and he walks around and he reminisces about this place. And that's the last episode that we had. He reminisces about this place and what a great place it was. वो क्रीम बिस्किट गिने? गिने 126। अब वो चॉकलेट गिन? 150। आज से सब सिस्टम से होगा। बाद में बर्नी के खारे बिस्किट भी गिन लेना। कल रात को बताया था ना? लिखा था। दिमाग में है। दिमाग नहीं चलेगा, खाली सिस्टम चलेगा। बाद में गिलास और कप भी गिन लेना। कादर भाई, ये सब क्या है? सिस्टम, कंप्यूटराइज, इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे आपका देश तरक्की कर रहा है, फिर आप उन पीछे क्या कर रहे? ए कादर भाई, गिनती बाद में करना, पहले चाय तो पिलाओ। अपने से डायरेक्ट बात नहीं करने का। तुम तंबी को बोलो, तंबी हमको बोलेगा। अरे तुम लोग सिस्टम से नहीं चलता है, इसीलिए तो ये मुल्क ऊपर नहीं आता। ये सिस्टम क्या है? आज से उधार बंद। उधारी क्या कादर भाई, सब बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, खत्म हो गया सब। मैं भी यहां से चला जाता, मगर क्या करूं, अपन का ड्यूटी है ना। लेकिन इन बातों को कौन समझेगा?